Arsenal 3, United 1, 3 points, international break. यूनाइटेड फैंस भाई लोग, आप स्किप करने से पहले बता दूँ, बहुत मेहनत से इमोशंस डाउन किए, बहुत मेहनत से काफ़ी टाइम लिया मैंने टू ट्राई कि ये वीडियो जितना हो सके उतना अनबायस रहे, जितना हो सके उतना मैं अपना क्लियर थॉट्स बाहर डालूँ, इमोशंस ज़्यादा आने ना दूँ, बिकॉज दिस इज़ अ प्रोफेशनल चैनल वी आर डीलिंग विथ हियर. सो या एनीवे, आई मीन आई विल बी कवरिंग, ऑफ कोर्स आई एम एन आर्सेनल फैन, ऑफ कोर्स देयर विल बी सम बायस, कुछ बायस तो होगा ही, बट there will be something for you also to take away. There is timestamps in this video, you can skip through, look for your favorite. Majorly हम करेंगे मैच रिकैप, टैक्टिकल ब्रेकडाउन, प्लेयर वॉच. तो आपको जो देखना आप देख सकते हैं, बट आई होप यू डोंट एंड यू वॉच स्टार्टिंग से एंड. आई होप आई कीप यू एंटरटेन स्टार्टिंग से एंड. एंड डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल. एवरी मैच के बाद और बीच में भी हम ये सब कुछ ना कुछ करेंगे. सो कमिंग राइट टू द मैच, अभी मैच रिकैप करेंगे. सबसे पहले तो ओवरऑल देखोगे आप, अगर ऑल स्टैट्स यहाँ पे देखोगे, पोजेशन 55 आर्सेनल 45 यूनाइटेड एंड शॉट 17-10, बट ये पूरा पिक्चर नहीं बताता है भाई. अगर आप फर्स्ट हाफ देखोगे, यूनाइटेड हैड 55% ऑफ द बॉल, आर्सेनल 45. उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है जो मैं टैक्टिकल ब्रेकडाउन में बताऊंगा, सो देखना ज़रूर क्या है वो रीज़न. बहुत peculiar रीज़न है. सेकेंड हाफ इज़ वेयर द गेम was absolutely inclined towards Arsenal, especially in terms of possession, control and वो सब. बट या हम जाएंगे मैच रिकैप में. फर्स्ट 20 मिनट्स ऑफ द गेम, आर्सेनल यूनाइटेड दोनों एक दूसरे को, एरिक टेन हाग, मिकेल, दोनों एक दूसरे को बोलते हैं तेरे पास क्या है, क्या प्रिपेयर किया, बता तू बता इन पोजीशन क्या कर रहा है, अच्छा 3-5 कर रहा है आर्सेनल, अच्छा ऑफ पोजीशन क्या कर रहा है, अच्छा 4-4-2 कर रहा है, अच्छा ठीक है. सब एक दूसरे को देख रहे हैं. रेफरी ने क्या सोचा, भाई मुझे बहुत बोर हो रहा है ना. एमिरेट्स है, आर्सेनल है, यूनाइटेड है. वेयर आर माई फ्लावर्स, मेरे फ्लावर्स कहाँ हैं, हाँ कहाँ है मेरा फूल. रेफरी ने बोला लेट मी हैव सम अटेंशन. रेफरी ने बोला तोड़ते हैं इस गेम को छोटे मोटे चीज़ों के लिए, फालतू चीज़ों के लिए. तो 20th मिनट तक तो फालतू गिरी हुआ. फिर एमिरेट्स ने चीज़ें अपने हाथों में ले ली. फैंस ने कहा रेफरी भाई बहुत हो गया, 20th मिनट है देख लो. सो मैच शुरू हुआ 20 मिनट के बाद. 21st मिनट से 100th मिनट तक मैच हुआ. एंड काय हैवर्ट्स हैड अ चांस. काय हैवर्ट्स स्लाइस, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन द 6 यार्ड बॉक्स, स्लाइस किया, डिडंट कनेक्ट, एनकेटिया. उसके पहले आई थिंक इट वाज अ क्रूशियल टैकल इफ आइदर लिंडलॉफ और लिसांड्रो, बट या गॉट यूनाइटेड गॉट, बच गए यूनाइटेड वहाँ पे. एंड देन अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, बॉल टू रैशफोर्ड in transition. It's the most predictable scenario in world football these days. You know what he's going to do. You know what the defender is supposed to do. Defender is supposed to delay. What did Ben White do? Delay. बट थोड़ा ज़्यादा ही डीले हो गए है वो. डीले. बेन वाइट डीले. सलीबा, रैशफोर्ड आया, but it wasn't enough. That 1v1 defending could have been 100 times better, but they were, I mean, when Rashford does this, he really means this. They were in Ben White and Saliba's minds, and डीले किया, बट आफ्टर अ पॉइंट यू हैव टू बी वेरी क्लोज, राइट. आपको थोड़ा नज़दीक पहुंचना चाहिए टू स्टॉप द शॉट फ्रॉम गोइंग इन. एंड रैमजेल कुडंट पोजीशन हिमसेल्फ द बेस्ट पोजीशन में, बिकॉज द डिफेंडर्स का भी वहाँ पे जॉब था. एंड 1-0 रैशफोर्ड. एंड व्हाट डिड आर्सेनल डिसाइड, द कैपिटानो मार्टिन ओडेगार्ड, after 37 seconds after the restart, 1-1 easy. I mean, Arsenal always, if you notice, आर्सेनल के पास हमेशा, लास्ट गेम में भी मैंने बोला था, आर्सेनल ऑलवेज विल हैव अ 5v4 इन अटैक. अगर आप देखोगे यहाँ पे आर्सेनल का 5v4, दिस इज व्हाट आई मीन बाय 5v4. सो आइदर मार्टिनेली और बुकायो साका, भाई कभी ना कभी ये लोग दोनों फ्री रहते ही है, मिलेंगे ही. सो वो हुआ. एंड मार्टिनेली हैड द बॉल इन स्पेस on to I think yeah, it was to Nketiah to Martinelli to Odegaard, and Odegaard scored. So that was a great response from Arsenal. तुरंत almost instant भाई, टाइम वेस्ट नहीं भाई, फटफट 1-1. बहुत खाली फोकट है, खा लिया, फटफट 1-1 कर दिया, ठीक है, great 1-1. and that first half didn't necessarily have any other things. 1-1. second half आए again. second half में फिर I think the next best chance Arsenal, काय हैवर्ट्स के पास बॉल था, काय हैवर्ट्स was brought down. फर्स्ट लुक जब मैंने देखा, मैंने आई वॉज विथ माई फ्रेंड्स, थोड़े दोस्त लोग के साथ बैठा था मैंने फर्स्ट बोला कि काय हैवर्ट्स, थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं था उसको, क्योंकि मैं शायद शॉट ले लूँगा लेफ्ट हैंड से तो गिर जाता हूँ, 2 जन आ रहे, सैंडविच हो रहा हूँ, गिर जाता हूँ. तो पेनल्टी दे दिया.
it was overturned. I can understand why it was overturned, to be honest, but it's the consistency, right? It's the damn consistency with these referees. They cannot, they will not, they did not rule out City ka blatant offside goal, but this one, of course, you know, let's go by the book and all of that. But yeah, that's the consistency, but I can understand why क्यों उन्होंने overturn किया. Anyway, that was done. So yes, both Arsenal and United made some changes. भाई थोड़े बहुत changes किए, and then 82nd minute में Garnacho threw on goal, scores a goal, but of course VAR ने क्या देखा? Gabriel Magalhaes with 200 IQ, with what every smart last man defender does. देख रहे हो भाई, striker run पे ले रहा है, stepping up, getting Garnacho on goal, offside. So yeah, बच गए भाई. Still 1-1. It was 86 minutes, so काफ़ी intense moment था, but भाई पूरा Emirates ने एक sigh of relief लिया और चलो let's go again. 8 minutes of added time. 96th minute, Declan Rice, 105 million what? 105 million of the Queen's finest, अब किंग हो गया ना भाई, किंग्स फाइनेस्ट पाउंड्स. मैंने भाई ये एनविजन किया था कल कि भाई डेक्लन राइस और यूनाइटेड के अगेंस्ट स्कोर कर रहा है, कितना अच्छा लगेगा. काय हावर्ट्स स्कोर कर रहा है, कितना अच्छा लगेगा. काय हावर्ट्स फॉर सम अदर डे, बट राइट नाउ वी सेलिब्रेट डेक्लन राइस. पहले लगा भाई आर्सेनल ने 115-215 कॉर्नर्स लिए नियर पोस्ट पे, बट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई, बिकॉज मोस्ट ऑफ यूनाइटेड जो भी मेजॉरिटी स्ट्रॉन्ग हेडर्स थे सारे फार पोस्ट पे थे. सो आर्सेनल ट्राई टू टारगेट द नियर पोस्ट एज मच एज पॉसिबल, बट देयर वाज वन कॉर्नर, बुकायो साका फार पोस्ट, डेक्लन राइस पहले चिन पे, फिर छाती पे, फिर कहाँ पे, फिर भाई पैर घुमाया, फिर एवेंस पे, फिर ओनाना पे, फिर गोल पे, फिर डेक्लन राइस रन पे, फैंस पे, सब पे 2-1 celebrations all. फिर भाई United had to go full throttle. Who got the ball? Fabio Vieira. Fabio Vieira के आगे क्या था? Space है तो Fabio Vieira के सामने तो आपको क्या करना चाहिए? Run किसने लिया? Jesus. Fabio Vieira ने क्या किया? ढूंढा उसको. Correct. Simple. फिर Jesus भाग रहा है, डालो भाग रहा है, Jesus डालो. ठीक है, थोड़ा फिसल गए डालो भाई, बट भाई मोमेंटम में था. इट विल बी वेरी हार्ड, थोड़े मीम्स बनेंगे, बट इट इज़ व्हाट इट इज़. 3-1 Arsenal, 3 points, sigh of relief, GG's. That was the game, and now we come to the tactical breakdown of the game. और अगर आप देखोगे, I had told you there was a reason why first half में we saw 45% Arsenal and second half में 65% Arsenal. We will come to the tactical board. On possession, in possession, Arsenal 3-2-5 majorly, but like Mikhail said, it's not necessarily Arsenal play with one system. Of course 36 system ऐसा कुछ कहा था Mikhail ने, but it's, I mean, generally अगर if it's easy to understand, easy to explain करना है तो 3-2-5 on the ball, and United off the ball was almost a double pivot, so 4-2-3, whatever you want to call this, 4-2-1-3, but it was essentially this in possession. When Arsenal was in possession, 3-2-5 against a 4 double pivot, 3 up front and Bruno in between the line. This is how the game was. So like you noticed, there was a 5v4 for Arsenal. There was width, so either Bukayo Saka or Martinelli were always in space. And then why 45% in the first half? Because Zinchenko was told, और whatever it is, थोड़ा आर्सेनल का 4-1 हो रहा था. बेन वाइट थोड़ा पुश कर रहा था, and Rice यहाँ पे था, and Havertz was the one who was coming in the first phase of build-up, second phase of build-up. Normally Kai Havertz is told to stay in the second and third phase especially. That's where he is the most effective. But आप अगर first half देखोगे, there were instances where he almost came as deep as this to get the ball, to get into first phases of build-up, second phases of build-up, and Zinchenko was kept in the wide areas, and that led to lack of control, of course. And second half, I had that feedback, and we wanted Zinchenko on the ball, and वो inversion था, we did what we do best. There was Zinchenko who inverted, and the control was back in, and we ended up with 65% of the ball. So this is what Arsenal did on the ball. And off the ball, Arsenal had their standard 4-4-2. Whoops. भाई थोड़ा Arsenal had 4-4-2. Zinchenko inversion से जाता है left पे. Rice, Havertz. You have your wingers out wide. You have Eddie and Odegaard up front marking your two CBs. And what happens with United was interesting, because there was a very, very interesting point that I noticed.
Up out of the three midfield, Eriksen was the only one who came for the build-up. Bruno, okay, sometimes he came, sometimes he did not. One of the two fullbacks pushed high and wide. Say for example, if it's Dalot, so Lisandro यहाँ पे आ जाता है, Lindelof थोड़ा center, Wan Bissaka यहाँ पे. What does Casemiro do? He was hiding. He had to hide. Build up position में you always see any footage आप निकालो. Casemiro was trying to hide from the build up. He was told to do so because थोड़ा sus है. On possession, in possession, Casemiro थोड़ा sus है. Is that a liability? Would ETH like it? I'm not sure. अगर आप देखोगे यहाँ पे एरिक्सन ड्रॉप होता है, Casemiro either is engaging some man over here, engaging someone over here, or what he used to do was maybe go here, become the third CB, and one of the centre backs used to just push. Sometimes it was Lisandro Martinez who used to push. The back line used to come over here. Then you can use both these midfielders, Lisandro and Eriksen, to then build up something like that. But yeah, man, Casemiro, it's not sustainable doing this with Casemiro, but it is what it is at the moment. Ten Hag is, he's trying to get the best out of whatever he has. Unfortunately, he had none of the fullbacks who could invert, so वो भी एक issue था. So yeah, that's how they did, and changes were pretty direct. Arsenal के पहले देखेंगे, Zinchenko came out, Tomiyasu straight away, same role, inverted. Who then came out? Martinelli came out, Nelson, direct again. Kai Havertz came out, Fabio Vieira in that same position, and Nketiah came out, and Gabby Jesus right up front. That's what Arsenal did. United, what did they do? Martial came out, and there was a debut from Højlund, who was very impressive, very powerful. By Højlund, Gabriel Magalhaes के अंग पे, Gabriel Magalhaes Højlund के अंग पे, दोनों एक दूसरे के अंग पे. पूरा गेम भाई अंग खेल रहे थे. सली सोच रहा था मैं जाऊँ हेल्प करूँ, नहीं भाई, दोनों एक दूसरे के बारे में देख रहे थे. Højlund, great piece of play for that Garnacho offside goal, but yeah, very promising game from Højlund. I like it. I liked what I saw, and yeah, Garnacho had to come on, and then what happened? Tumhara Bhaura had to go out. Antony, Rashford had to sacrifice, go on the right so that Garnacho could come on the left. Almost walked out. भाई Antony का मैं हमेशा बोलता हूँ, he is not a 100 million winger. He is a rotation option for a 100 million winger. So that's what Antony is. But it is what it is. You have to work for it. But I hope United play the likes of, or ETS try the likes of Pellistri, Sancho, Garnacho on the right, some other options on the right, because Antony is a liability. It's for sustained, for a good future, you need to try someone else on the right. But yeah, as opponents, do we care? Not as much. I mean, I won't complain, So yeah, it is what it is. And then two unfortunate, substitutions. Both Lindelof and Lisandro had to come off, and you had Maguire and Johnny Evans who had to come on as defenders. So almost like to like substitutions for both teams. Of course, the system changes because Vieira had more. I mean, again, like last match, why did Vieira excel? Because United were in building, right? Game यहाँ पे. What is the midfield? This is the midfield. यहाँ पे इतना game नहीं हो रहा था. So what could Vieira do? Just roam where he wants to, just roam wherever he wants to, play the balls, जो भी करना है करो. But यहाँ पे duels नहीं हो रहे थे. Again, lack of duels. Vieira excels. Let's see. I want to see now a game where there is a duel. There is shot से है वो पूरा 90 minutes के लिए, whatever minutes, where duels है, वहाँ पे क्या कर रहा है मुझे वो देखना है. While chasing games, you want a Fabio Vieira. I like that dynamic. Even Mikel Arteta said after match भाई कि Vieira का एक scene कि when we are chasing a game, I like the option of bringing on Fabio Vieira. भाई मजा आ गया भाई. Fabio Vieira को लाओ, space लाओ, बनाओ, runs बनाओ, भाई आपको ढूंढेंगे. बहुत ही सही. And one point that I wanted to focus was जब भी on the ball रहता है United, when there is their three up front, Onana tries to be one of the two centre backs, right? तो RCB वाले position में थोड़ा जाता है, ये LCB वाले position में जाता है. So that is one key change, that key tactic that United tries. आज इतना देखने नहीं मिला because none of the two full back could invert. So yeah. But yeah, अगर आप average positions देखोगे पूरे दोनों teams का, तो you will get an idea कि Arsenal का average position. Look at Gabby Martinelli. He was on Wan Bissaka all day, but Wan Bissaka was pretty tight. One of the greatest 1v1 defenders in the world. On the ball sus, but one of the greatest 1v1 defenders off the ball. So he was always on Wan Bissaka. That's why the average position of Gabby Martinelli up front. But अब यहाँ पे देखोगे, this is what happened, right? Zinchenko not
so much in the central, and Kai Havertz not so much up front. So this is what the first half dynamics was. And if you include the substitutions, when you're chasing a game, you're trying to score, so of course Fabio Vieira थोड़ा आगे के पोजीशन में, टॉमियासू थोड़े आगे के पोजीशन में, लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशंस काफ़ी अच्छा था, बिकॉज राइट में बुकायो साका, बेन वाइट, आऊँगा हमारे बिग फाइव पे आऊँगा, जल्दी आ रहा हूँ मैं, रुको भाई, जाने नहीं दूंगा. तो हाँ, लेफ्ट हैंड साइड काफ़ी अच्छा था. एंड इफ़ यू लुक एट यूनाइटेड, Rashford was staying there for your transitional moments. He was there and he scored from that position. But पीछे देखो, tight back four, double pivot, Bruno up front, Martial. But Martial, not too effective up front. But अब देखो, हॉयलुंड आने से क्या हो जाता है. हॉयलुंड central striker presence up front central, काफ़ी फ़ायदा. And yeah, so प्रॉमिसिंग. अमराबाद भी आ जाएगा तो कैसेमीरो का लाइबिलिटी भी ठीक हो जाएगा. सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट यूनाइटेड डू गोइंग फॉरवर्ड. विल कीप अ टच ऑफ इट. एंड नाउ कमिंग टू द प्लेयर ब्रेक डाउन. मैंने बोला था 5 जन, आर्सेनल के 5 जन हैं जिनसे मैं 8 आउट ऑफ 10 एवरी मैच एक्सपेक्ट करता हूँ, और वर्स्ट कम वर्स्ट 7 एक्सपेक्ट करूँगा, और 5 में एट द मैक्सिमम 2 जन कैन हैव बैड गेम्स, नॉट 3. एंड अगेन सलीबा, and who are those 5? William Saliba, Ben White, Martin Odegaard, Declan Rice, Bukayo Saka. Ben White, first half, too many loose balls. Odegaard, not too effective. Bukayo Saka, we know what levels he can reach, but wasn't at his best. Of course, United का flat back four that they didn't have to do, so they could tackle Bukayo Saka. But no, I expect more from them. But Declan Rice had a fantastic game. I'll come to him. भाई 100 फुट यहाँ पे गुड है, उसको टच कर लेता हूँ, नज़र ना लगे. डेक्लन राइस, आवाज़ भी आया, चलो उस पर मैं आऊँगा. लास्ट हमारा प्लेयर वॉच है, माई मैन ऑफ द मैच ऑफ कोर्स. एंड देन माई नेक्स्ट प्लेयर वॉच इज़ गैबी जेसूस. जोगा बोनीतो मैन, जोगा बोनीतो. भाई बंदा आया. एडी एंकेटिया, फैंटास्टिक गेम, बैक टू गोल, क्रेजी, नो कंप्लेंट्स व्हाटसोएवर. बट व्हेन जेसूस केम ऑन, मैन, भाई एवेंस और मैग्वायर, उनका गलती, इट्स नॉट बिकॉज दे आर इट्स एवेंस एंड मैग्वायर. बस 70 मिनट नहीं थे, वो आए और आते क्या, जोगा बोनीतो, यूजुस आया, स्टेप ओवर, ये क्रिएटिंग chaos in that defense, absolute chaos in that defense. There was fear in that United backline when Jesus came on. That was uncertainty. Arsenal could do something. You could sense something is happening. Jesus was fantastic when he came on, bhai. Fantastic, so effective, and he was rewarded by a goal. So रियली हैप्पी, लुकिंग फॉरवर्ड. आर्सेनल स्पॉइल्ड फॉर चॉइस भाई. आगे बहुत सारे ऑप्शंस है अभी. काय हावर्ट्ज मैं चाहता हूँ आगे खेले, जगह नहीं है. एडी एंकेटिया फॉर्म में है, ट्रॉसार्ड को तो खेलने नहीं मिला, जेसूस फॉर्म में है. देखते हैं भाई. इट्स मिकेल्स हेडेक टू हैव अप फ्रंट, बट या इंटरनेशनल ब्रेक है, ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड टू मैनेज. बट नाउ माई मैन ऑफ द मैच, माई फेवरेट डेक्लन राइस के पास बॉल था. आपको लग रहा है पीछे से मैन है, पूरा क्राउड चिल्ला रहा है मैन ऑन. डेक्लन राइस के पीछे भी आँख है, अपना ट्रक वाला बॉडी सामने रखता है. अब he uses his body, he plays the right pass with the right weight, with the right vision, he takes the right touches. Oh my God, such a clean player, such a clean footballer. I mean, England are blessed with that midfield, but yeah, Declan Rice, what a game. What a fantastic game. And the football gods rewarded him with his goal, and the football gods rewarded Gabriel Jesus also with his god. Football god, con? Fabio Vieira. Just joking. So yeah, those were the highlights for Arsenal. The two players, my standout players for Arsenal. And yes, this weekend is an international break, but we will have content coming out. We will have a few podcasts coming out. We will be summarizing the Premier League's first month. We will be summarizing Arsenal's first month. So do like the video, subscribe to the channel, bell icon and all of that. So yeah, hasta la vista, Kaju Badam Pista. See you later, alligator. Bye bye.